Good morning, Lakshmi. Good morning, sir. Off करके रखी दिया speaker समझते जहाँ जेतरो दरकार हो मुझे पचार दो. The modern history fast. This will be the first lecture on the modern history, and I will start from the advent of Europeans. From the advent of Europeans onwards, हमें ऐसे continue करीबा. The advent of Europeans from देखिबा first. This would be the first lecture on the modern India. Advent of Europeans रो एथिपिक class start हो so that हमें linkage करी परिबा आउ हमरो क्रोनोलोजीटा मेंटेन रहिबो. अदरवाइज डायरेक्ट जति हम 1857 रु पढिबा आज पर द सिलेबस मेन सिलेबस अनुसार तम भितर कनेक्शन हे परिबन टॉपिक गुडा रो लिंकेजेस हे परिबनी तण करको हमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस रु पढिबा. द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जेतरा हमें पढु पोर्तुगीज कथा ही ऑब्वियसली द नेम ऑफ वास्को डा डी गामा always appears first in the list because that person led the exploration through the, I would say, the water route, not through the land route. So now you can see the coming of Europeans to India. The first कथा में देखिए first European who came to India, it was Alexander 326 BC. Alexander कथा तो समझते जाने 326 BC Alexander, and that time he invaded which kingdom or the which region, that is Taxila. That is what? Takshila of Jammu and Kashmir, Punjab region. That region, Afghanistan, these parts were known as the Takshila. Okay, so जो तक्षशिला पार्ट को ऐसे इन्वर्ट करते थे अलेक्जेंडर इन 326 BC. In 326 BC फास्ट मन रखो तुम्हें, that is the what Alexander जोटा कि तक्षशिला को अटैक करते because Alexander कहीं के आसते now why Alexander. आज क्लास टा अलाउ करिवि जे जेतବେଳେ एंट्री करिवो आज क्लास अलाउ करिवि काली ठो अलाउ करिवि एटे टिके ध्यान से मन रखिवो काली ठो 10 मिनिट्स पर जे जॉइन करिवो नॉट अलाउड पूरा शार्प टाइम 7:30 मीन्स 7:30 टिके खराब लागिवो बट मु डिस्टर्ब हेबिनी छुआ से बुझा पडुछि किछि है ना. सो Okay. एटे मन रखिवो कोइ देली मु फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स I believe that you will enter into the class within 10 minutes. That means the link will be sharp sent by 7:30 or 5 minutes before. I will always appear 5 minutes before, and you have to enter into the class within the 10 minutes. 10 minutes आसीଯିवो, otherwise class ର duration कमिଯିवो, disturb हबो, किछि benefit हबोनी. जतिकि समय हम दबा पूरा perfect दबा. सर ये क्लास रे रिकॉर्डिंग कर देगी सब मिलिबो आज जेमति होउथला हमर सेमति मिलिबो ऐप रे है ना. सेम प्रोसेस रहिबो जेमति तमर क्लास रिकॉर्डिंग होउथला सेमति रिकॉर्डिंग हबो, जेमति तुमको ऐप रो अपलोड ही जाउथला तमर जीएस बैच रे सेमति अपलोड ही जिवो ना बुझा पड़िबन कागु है ना. तो हम देखिबा दैट मींस यूरोपियंस. अच्छा ये क्वेश्चन टिके मु लिंक करके पढेबी तो दैट मीन कमिंग ऑफ यूरोपियंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन मु करी कि 326 BC अलेक्जेंडर कथा समझते जानिचो. Alexander the Great who came to India and he fought the battle of Hydaspes, है ना. And the name of that is the king किए थे Poros. The king was Poros. कोठी थे Takshila. Takshila was the kingdom. King was the Poros. And who invaded Alexander when 326 BC. Now Alexander कहीं की इंडिया को आसले because he heard about the glorious scenario about India. तो से कहाटू सुनिले कि तो गोटे कहिथिबो तांको ना हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री है ना. तो कह दे ना फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस.
ये जन जानते फास्ट हिस्टोरियन भी कहुए ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस से इंडिया को पिक्चराइज करथिले एमिति कि इंडिया इज ए वेल्दी कंट्री, इंडिया इज हैविंग एवरीथिंग इन द टेम्पल्स, इंडिया इज द मोस्ट मतलब आम जदि कहबा रिवार्डेड प्लेसेस है जो जदि तुम ताको कैप्चर करूछ प्लस से तांकर निजर भी इंटरेस्ट थिला टू बिकम द किंग ऑफ द अर्थ, पूरा अर्थ को रूल करे पे तांकर गोटे निजर भी ग्रीड थिला अलेक्जेंडर कर सेति 326 बीसी से अटैक करिवो को किंगडम को तक्षशिला, बिकॉज तक्षशिला तुम जानचो यदि हमें जम्मू कश्मीर रीजन को वर्तमान पंजाब जम्मू कश्मीर रीजन को नेबा अफगानिस्तान, दिस रीजन वाज द तक्षशिला रीजन एंड तक्षशिला हम आर्ट पढ़िबा जेतरो बुद्धिज्म आर्ट पढ़िबा बा बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर पढ़िबा सेतरो तक्षशिला रे पढ़ा जाय हमर जोटा कि हेलेनिस्टिक आर्ट बोली हमें कहू तक्षशिला को मिक्सचर ऑफ व्हाट इरानियन जहाँ को हमें कहबा मेसोपोटामियन बा इरानियन एंड इंडियन कल्चर ऑफ मिक्सचर ए जो हेलेनिस्टिक आर्ट डेवलप होइतला तो सेटा गोटे स्कूल ऑफ आर्ट एज बुद्धिज्म रे जा भी हो हु वाज द रूलर दैट इज द पोरस was the ruler and what was the battle it was the Hadassah battle है ना ये तो समझते जानिछ then why he came because of to gain some wealth किसी wealth ପାଇଁ से आसीथिले and also expansion of territory और तांको जो ग्रीड थिला to become the ruler of the earth सेति ପାଇଁ अलेक्जेंडर आस्थिले तो अलेक्जेंडर जदि हम देखबा लैंड रूट रे आस्थिले सबसे इंपोर्टेंट कथा हला से लैंड रूट देकी आस्थिले इंडिया को है ना वाटर रे आसी नथिले ना वाटर रे थाले फर्स्ट टाइम कि आस्थिले वास्को डा डी गामा वाटर कि आसीबो तुमरो वास्को डा डी गामा ना थ्रू द वाटर वास्को डा गामा जदि हम देखबा वाटर देकी इंडिया को आस्थिले इन 1498 एडी 1419 एडी रे आस्थिले वास्को डा गामा थ्रू द वाटर बट लैंड देई जदि तुमको एठी प्रीलिम ऑफ मेंस रे क्वेश्चन आसीबो नाही बिकॉज़ मेंस सिलेबस स्टार्ट्स फ्रॉम द 1857 टू मेंस सिलेबस स्टार्ट हुए सो दैट जदि ये आसीबो इधर कल्चरल पार्ट रे आसीबो अदरवाइज ये तुमरो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू बस आमे पढु जेति पे कनेक्ट करिया पे ना अलेक्जेंडर कथा मु तुमको कहि देली से कोबट आस्थिले लैंड रूट देई आस्थिले बट हम देखियो जदि वाटर रूट दे फर्स्ट यूरोपियन जदि केही आस्थिले दैट वाज द वास्को डा डी गामा ये आस्थिले वास्को डा गामा ना वाटर रूट दे के काहे के आस्थिले देखो बहुत 326 BC that time India for the first time came in touch with Europe 326 BC सेतेबेले ठू यूरोप सह टच रासी गला एंड ट्रेडिंग वाज आल्सो देयर ट्रेडिंग भी होथिला ट्रेड वाज आल्सो देयर बट तापरे एते लंबा गैप पर हम देखबा 1498 रे फाइनली आसुची वास्को डा डी गामा थ्रू द वाटर ना दैट मींस हम कहबा एते वर्ष जाय द ट्रेड वाज गोइंग थ्रू द लैंड पार्ट और थ्रू द लैंड रूट दे के हम ट्रेड होथिला जेमति तमर सिल्क रूट जा थिला जेमति चाइना रो पास है कि पूरा यूरोप को जाउथिला पासेस थ्रू द इंडिया so that silk route was used for the trading between India and Europe as well तो ट्रेड होथिला नो डाउट बट कोन तले एमती डिफरेंस हे गला तो सडनली हमको वाटर ही बट आसे पड़िला वास्को डा डी गामा को लैंड पटे आसिलानी बिकॉज़ दैट वाज इन बिटवीन जदि हम देखबा 1453 दैट वाज द आई वुड से द लैंडमार्क इवेंट इन यूरोप एंड आल्सो वर्ल्ड कोन रहबो 1453 ना 1453 रे एमती कोन हैला जोथि पाई कि 1498 रे वास्को डा डी गामा वाटर दे कि आसिले because of the fall of Byzantine Empire or I would say the Constantinople the Constantinople रो fall होची केबे है ना जदि हम देखा 1453 रे Constantinople the capital of Byzantine Empire एटा तो सुनिथो समझते ना सुनिनो Byzantine Empire सुनिचो Byzantine Empire वर्ल्ड हिस्ट्री जदि की पढिथबो है ना तो पक्का जानिथबो अदरवाइज यदि मॉडर्न इंडिया पढिथबो तो फॉल ऑफ Byzantine Empire तो Byzantine Empire रो कैपिटल थिला कोन Constantinople सो Constantinople रो जदि फॉल हे गेला दैट मींस हम कहबा जो किंगडम थिला एक मिनट सो हम देखा कोन
Constantinople. So Constantinople ର fall होउची, that was the capital of Byzantine. ना आकु किए ताले तुम कहबो आकु किए कैप्चर कला? Who captured it? Muslims. ताले आकु किए कैप्चर करबो? Ottoman Empire. ताले who? It would be Ottoman Empire. ध्यान से मन रखो, it would be Ottoman Empire. Ottoman Empire कोठी थिला? Turkey. It was Turkey. ना टर्की रे थिला Ottoman Empire. Byzantine Empire थिला Eastern Europe. ध्यान से मन रखो, Eastern Europe रे थिला Byzantine Empire. जोटा कि पूरा यूरोप को कंट्रोल करूथला दैट टाइम. जदि हम देखिबा Byzantine Empire जार कैपिटल थिला Constantinople was the largest city in the, हम जदि कहबा medieval टाइम रे सबटु बड़ सिटी थिला तमरो Constantinople. जो थे कि जेमती फॉर एग्जांपल तुम अकबर कथा भाबो. अकबर जेतला आग्रा रे रहउतला तांको कोर्ट रे जो बहुत सारा पोएट्स थिले, बहुत सारा हम कहबा ऑल द लिटरेट पीपल्स यूज्ड टू बी harder, they used to live in the court of Akbar. तो अकबर टाइम रे बा मुगल टाइम रे हम कहबा जेमती आर्ट एंड कल्चर हे जो, लिटरेचर हे जो, म्यूजिक हे जो, किंबा साइंटिफिक टेम्पर जहां भी सब डेवलप हेतला, और लेट्स से द गुप्ता टाइम रे, दैट मींस हम कहबा किंग्स वर द पैट्रोनाइज ऑफ दिस नॉलेज, हब ऑफ नॉलेज थिला कोन? Constantinople. The hub of the Europe knowledge thila Constantinople, because all were patronized by the king, and that the empire was the Byzantine Empire. The Byzantine Empire को capture करूची Ottoman Empire, the Muslim, now everyone started to fled from the Constantinople. The Constantinople आउट हमें जदि देखिबा Ottoman जो empire अछि, वर्ल्ड मैप रे जदि तमे देखिबो कि टर्की को जदि हमें देखिबा कनेक्ट करूची, टर्की कोठी थ्रू द बोस्फोरस स्ट्रेट एंड मारमारा सी, ये तो समय डालेंडा स्ट्रेट, ये तो समस्त वर्ल्ड मैप जानिथो करैथले. ता द्वारा कोन होची, टर्की इज द गेटवे टू कनेक्ट द, टर्की को कोन कहजे? माइनर ऑफ एशिया भी कहजे, है ना. तो टर्की देखि हमें यूरोप को जाऊ. दैट मींस यदि टर्की को कहीं कैप्चर करूची, बा ये जो तमरो नैरो वाटर चैनल को कैप्चर करूची, पूरा ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया विल कट ऑफ. तो ये हेतला कहा द्वारा, दैट इज द हमें कहबा ऑटोमन एम्पायर, है ना. तो ऑटोमन एम्पायर को कौन कला? कैप्चर कर देला. सो दैट हमें ट्रेड खत्म हो गला, लैंड रूट कौन हो गला? खत्म हो गला. ना यूरोप रु कहीं वर्तमान लैंड रूट दे इंडिया को आसी परिबो नाही, जो लैंड को यूज करके आसुथले, मतलब सिंस द civilization or since the times they were using that route as the trade for the India and Europe. एबे आउ हेई परिबो नाही. आउ गोटे जिंस कोन देखा गला हमर ऑटोमन एम्पायर जेतले अटैक कला, कन्स्टांटिनोपल रो फॉल हे गला, समस्त भागिले कन्स्टांटिनोपल रो कोठी की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, पर्टिकुलरली इटली को समस्त गले, एंड दैट लेड टू द emerge of Rome, that led to the emerge of what? Venice. तो इटली रो जेते शहर सब आज देखुछ तुमे, है ना, फ्रांस जहाँ भी देखुछ, ये सब शहर मानकर डेवलपमेंट है आफ्टर द फॉल ऑफ Constantinople. कारण Constantinople थिला वन ऑफ द हब ऑफ द नॉलेज एंड द लार्जेस्ट सिटी इन दैट पीरियड ऑफ. एंड ध्यान से मानकर 1453 also known as the beginning of modern age and end of the medieval age. Once more I repeat, the 1453, the fall of Constantinople and the fall of Byzantine Empire, captured by the Ottoman Empire, the Muslim they captured, the Christian जो पूरा region को capture कला, that also the known as the world enters into the modern age. That means we are in the 15th century. 1453 कहले कोन हमें 15th century. So 15th century को किछि लोक कहंती that is the beginning of the modern era. बट किसी लोग कहते 18th century, 17th century by 18th century को कहते beginning of the modern era. So that's a debatable things. I would not go into that fact and concept को किसी जीवा दरकार नहीं. तो आमर दरकार हमें ताको कनेक्ट करबा काहे कि वाटर बटे आसिला वास्को दा गामा, सेथि पे मु तुमको ये स्टोरी सुनाउची. तो Constantinople जेतले फॉल हे गला, there was no way to connect the India and I would say the Middle East or the Southeast Asia or let's say the East Asia to the Europe because of the Muslim माने कोन कैप्चर करके रखिले, तेणु आसी परिबो नाही. So they had only one option to come through the water. वाटर देखि केमती आसीबो, ता पई बोट दरकार, ता पई शिप दरकार, ता पई वॉच दरकार, ता पई कंपास दरकार. So many instruments were required, है ना. ता पई एक्सपर्टीज दरकार, ता पई एक्सप्लोरेशन होबा भी दरकार वर्ल्ड को. तेणु करके एबे कोन करले ना, यूरोपियंस पर्टिकुलर द पोर्तुगीज, फ्रेंच, दोज आर द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो माने कि अटलांटिक ओशन, आमी कहबा बैंक सॉरी ऑन द शोर ऑफ अटलांटिक ओशन रे आसुची, दे स्टार्टेड नेविगेशन, है ना. दे स्टार्टेड नेविगेशन जेमति तमे पोर्तुगीज पर्टिकुलर आउट से द पोर्तुगीज, है ना. द अच्छा द प्रिंस हेनरी कथा तो समस्त जानछ, द नेविगेटर जाको कहे प्रिंस हेनरी पोर्तुगीज रो प्रिंस थिले.
तो से कौन कले दे स्टार्टेड टू कौन कले इंडिया को केमती आसीबो एबे तो वाटर रूट रे आसीबो दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड टू फाइंड आउट द रूट्स एंड धीरे धीरे से माने तण करी फाइनली दे गॉट द रूट हम देखबा भास्को डा गामा फ्रॉम द केप ऑफ गुड ऑफ साउथ अफ्रीका टू नहीं कि पूरा इंडिया रे आसी पहुंचले दैट टू बी इन द मंथ ऑफ समर जदि हम देखा समर आसी पहुंचबो 1498 and that again established the relation between or the trade between India or the Asia, I would say India not Asia, and Europe. हे जो एते बुझा पड़ जो समस्त को एबे न बुझा पड़िबनी everyone comfortable with this कि why Vasco da Gama then came through the water, so that was the reason that he had to come through the water. Now Portuguese जेतरो आसिला तो समस्त जानछ Portuguese जेतरो आसी पहुंचबो and when he returned back बुझि परछो so that means जो से नहीं कि जाइतले सामान सब goods particular not say the services goods जेमति तमरो जो what I would say the जते तमरो स्पाइसेस अछि फ्रॉम केरला रु धर की जाकी पहुंचले यूरोपियन मार्केट रे तारो डबल इनकम कले पुणी थरे आसिले तो धीरे धीरे हम देखबा इंडियन रो गुड्स द गुड्स ऑफ इंडियन गुड्स इन यूरोपियन मार्केट रो डिमांड बहुत बढ़ी गेला तण को धीरे धीरे लोक कमर्शियल बिजनेस करे पे चेष्टा कले एंड कमर्शियल राइवली स्टार्ट हे जबो अमंग द यूरोपियंस पावर जा भी हो तो आमे मतलब गोटे गोटे मो डिटेल को जाउनी तो भास्को डा गामा अगेन ही विल रिटर्न केम टू इंडिया एंड ताधरा कोन जणा पडला यूरोपियन मानको को के इंडिया रु जो सामान ने की जाउचंती जो पर्टिकुलर द स्पाइसेस केरला कोस्ट रु ने की जिवे तारो डबल इनकम से मने करूथले सेति पे बाकी देशर जदि हम देखिबा कंपनीज माने बाकी देशर किंग्स माने they also wanted to have the trade relation to set the trade relation with India. Obviously that will lead to the commercial rivalry among the European powers, and that also happened. Here you can see the Portuguese in India. That means 1493 AD the Vasco da Gama Portugal discovered the new route from the Cape of Good of India. तापर ऐसे तुम्हारा कालीकट रे पहुंचबो one of the most beautiful beaches among I would say in India. तो जैमरिंग क्षेत्र हिंदू रूलर थिले कालीकट रो से तार कोन करथिले परमिशन देथिले जोटा कि लिखे छि देखो 60 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन जति कि टंका से खर्च करके आसीथिले तार 60 गुणा रो अधिक से पैसा इनकम करथिले ये प्रीलिम पॉइंट पई दरकार है ना 1500 जेरे जति हम देखबा सो दैट मींस से पुनी आउथरे आस्ते सो टू टाइम्स ध्यान से मन को टू टाइम्स से इंडिया को आछंती भास्को डा गामा आ बहुत सारा प्रॉफिट पाइछंती तांकर प्रॉफिट को देखि कि बाकी माने भाबिले कि व्हाई नॉट वी शुड हैव ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया दैट इज व्हाई दैट लेड टू द कंपटीशन दैट लेड टू द a sense of profit among the all Europeans power, and they started to making the sheep and all the stuff which was necessary to establish the trade relation with India. तेणु करी आमे देखिबा 1500 रो कोन हैला ना तमे देखो Pedro Alvarez Cabral arrived in India and Vasco da Gama also made second trip. So second trip for 1502 रे आसला Vasco da Gama, and that was also the last. The Portuguese established trading settlement at Calicut, Cochin, Kannur. So these were the reason where this settled their trading amicable settlement. माने ट्रेड करे पे जहाज जेमति हमर पोर्ट वगैरह छोट मोट दरकार तो पोर्तुगीज आसिकी पहुंचले धीरे धीरे पोर्तुगीज को फॉलो करबे अदर्स. द फर्स्ट गवर्नर देखि दे फ्रांसिस डी अल्मेडा. सो फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर जे कि तांकर ट्रेड को रेगुलेट करे बा ट्रेड को देखभाल करबे इन इंडिया. Okay, fine. Then I देखा 1509 रे कोन हबो, that is Albuquerque was made the governor of Portuguese territories in India. Up to 1510 he captured the Goa from the ruler Bijapur. Bijapur का अंडर थिला. Bijapur that time it was ruled by the what तुम देखे देखो during the reign of Sikandar Lodi. It was a Muslim territory. कर्नाटक कोठी Bijapur अछि ना कर्नाटक गोवा जो कोस्ट रो टिकी इंटीरियर को कहा जे Bijapur है ना गोलकोंडा Bijapur ये सब तुम रखो. Thereafter हम देखो गोवा become the settlement for the Portuguese settlement in India. ना ध्यान से देखो that means Almeida परे जदि हम देखबा ये थला तमरो Albuquerque. तो Albuquerque कोन कला सेकंड गवर्नर हैला और धीरे धीरे से तार एरिया बढ़ी बढ़ी चले टुवर्ड्स द नॉर्थ जेमति गोवा कर्नाटक ये सब कोस्टल एरिया को कैप्चर करी करी चले है ना.
तो पोर्तुगीज एस्टाब्लिश कले देयर डोमिनेंस धीरे 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 पूरा आम देखा डोमिनेंस करिवो कोठी ना तमरो ऑल्सो दे स्टार्टेड टू डोमिनेंस द गल्फ जदि देखा पर्शियन गल्फ है गल्फ ऑफ मालाका मालाया भी पेनिनसुला जो आमर अच्छी इंडोनेशिया मालयेशिया से सब रीजन को से कैप्चर कले सेठी भी बेनिफिट मिलला खाली इंडिया रु कहीं ट्रेड करिवे तो पूरा आम देखा पूरा साउथ एशिया में देखा धीरे 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 स्ट्रॉन्गेस्ट नावल पावर भी हो गला तो आल्बेक कौन कले ही सेट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नावल फोर्स इन द साउथ एशिया पूरा साउथ एशिया को कैप्चर कर देले दैट मीन्स पोर्तुगीज आम पोर्तुगीज माने इंडिया इंडोनेशिया और यूसे जाभा तुमरो मलेशिया पूरा ये रीजन को कैप्चर कले देन आसबे तुमरो निनोडा कुन्हा कैप्चर द ड्यू बेसिन एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात बहादुर शाह से समय रूलर थे तुम गुजरात ये सब दैट मीन्स हमको पूरा गुजरात कोस्ट को भी कैप्चर कर धीरे धीरे ऊपर को चले मतलब कालीकोट रो स्टार्ट करके गुजरात जाई गले तो गुजरात जाई मन धीरे धीरे कैप्चर करी करी गले बिकॉज ऑफ द मनी पावर हो गले एबे धीरे धीरे एंड नावल फोर्स भी बहुत स्ट्रांग थिला जेमति तुम लिखो सालसेट डामन बॉम्बे सब कैप्चर कले पूरा वेस्टर्न कोस्ट ग्रेजुअली दे मूव टुवर्ड्स द दैट मीन्स गुजरात एंड ओबियसली गुजरात पर आउ किछि नाही तो तेणु से माने ईस्टर्न कोस्ट को आसिया पे चेष्टा करिवे एबे सो अर्लियर आई विल से द पोर्तुगीज इंडिया को आसिला परे दे फोकस्ड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ओनली दे वर नॉट आइंग टू द ईस्टर्न कोस्ट को एते ध्यान दउ नथिले ईस्टर्न साइड रे से माने कागो दउथिले ध्यान इंडोनेशिया सुमात्रा ए सब रीजन को बेसी ध्यान दउथिले ट्रेड पई ना इन द मीन टाइम जदि हम देखिबा However, the Portuguese power declines by India in the end of the 16th century. किंतु ठीक 100 वर्ष परे जदि आफ्टर 100 years धीरे धीरे पोर्तुगीज पावर कौन हो डिक्लाइन हो इंडिया रे कौन पई कारण बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश है ना तो ब्रिटिश आसीगला परे आंकर पावरटा डिक्लाइन हो आफ्टर दैट मीन्स जदि हम देखो रियल पावर मु तो कोन पोर्तुगीज माने प्रथम थर फास्ट आस्तले दे केम फास्ट बट दे वेंट लास्ट एटा ध्यान से मन को ए तो समस्त जानचो प्राय है ना फास्ट आसीथले लास्ट गले किंतु रियल पावर तांकर खत्म हो सारी रियल पावर जदि हम देखा बाय तुमरो इट वुड बी 1763 by 1763 जदि हम देखा their real power almost ended off in India 1763 and 65 सुधा पोर्तुगीज रो जो रियल पावर ता थला खत्म हो जाई ऑलमोस्ट हमको 200 इयर्स से माने रही छथि इंडिया रे आ इंडिया को एक्सप्लोइट करछथि तो पोर्तुगीज माने आसीथिला बेले इंडिया को कोन कंट्रीब्यूट करछथि जेमति कि कल्टीवेशन टू इंडिया देखो दे ब्रॉट द टोबैको कल्टीवेशन टू इंडिया दे एस्टैब्लिश फास्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा in 1556 then Indian medical plants was first scientific work which was published at Goa तो एटा टिके देखि देबो तो these are the facts जो प्रीलिम पे तमे रखि परियो ये सब फैक्ट्स गुडा दरकार प्रीलिम पे दैट मींस सालसेट डामन बॉम्बे ये सब आसीगला ये कहां अंडर नेथिला दैट वाज कैप्चर्ड अंडर द निनोडा कुना अच्छा ब्लू वाटर पॉलिसी के करथिला माने अछि समस्त करो everyone Sasi blue water policy Yes, sir. Yes, sir. के Almeida है ना Almeida, sir. it was Almeida blue water policy that means speaker off करो तो Almeida was the blue water policy ध्यान से मन को ताको blue navy भी कहे and blue water policy कहले navy को strong करवा that means what to make the navy more stronger to make the navy more stronger okay so that was done by him तो एटा टिके मन रखियो that is the Almeida तो सेटा को तांकर पॉलिसी देन हमें एक्सपेंशन किए करिछि एक्सपेंशन जदि हम देखबा तीनटा फेज रही छी ध्यान से मन को पोर्तुगीज एक्सपेंशन टुक प्लेस इन इंडिया बाय द फोर पीपल फास्ट रहबो Almeida परे आसीबो तमर के जदि हम देखबा फास्ट थिला Almeida केना Almeida तम कोन स्टार्ट कर देला अप टू गोवा जे आसी गेला then आसीबो तमर के that Albeque the real founder who is Albeque ध्यान से मन को the real Portuguese founder in India is Albeque because ए गोवा को कैप्चर करबो बीजापुर को कैप्चर करबो and बीजापुर was a very strong that time I would say the territory बीजापुर को चैलेंज करबो एते इजी न थिला but that shows the power of I would say what Albeque सेथे पे Albeque को कहा जे the real founder of Portuguese empire in India ध्यान से मन को दिस इज द सेकंड फेज रे हम देखा गोवा कोंकण कोस्ट को से माने अटैक करले थर्ड फेज रे आसला कि जोटा कि पूरा तमरो आसी गेला निनोडा कुन्हा गुजरात एरिया बॉम्बे एरिया को कैप्चर करले देन फोर्थ फेज रे की आसीबो दैट इज द डुप्लेक्स है ना फोर्थ फेज रे आसीबो डुप्लेक्स तो
ताकू कौन करो मैप ड्रॉ करिवो केमती पढ़िवो देखो लेट्स एमती इंडिया मैप ड्रॉ कर देलो एठी लिखि देलो भास्को डा गामा एठी लिखि देलो तमरो आलमेडा देन आलबेको देन कुन्हा एंड एपटे लिखि देलो तमरो 1 2 3 4 5 खत्म दैट मीन्स लेट्स से फर्स्ट असला भास्को डा गामा सेकंड असला आलमेडा थर्ड असला आलबेक्यू फोर्थ असला that is what कुन्हा निनोडा कुन्हा फिफ्थ आसिगला किए तमरो डुप्लेक्स नहीं परिबनी बस ये हेगला तमरो ये पांच जन लोक दे टुगेदर दे फाउंडेड द व्हाट Portuguese empire a strong Portuguese empire in India apart from आउ कोठी करथिले ना पूरा अरेबियन पेनिनसुला आ एपटे तमरो ये सब बस मैप करके एमती तमे मन रखितला छोटे छोटे नोट बनेबो एमती नहीं परिबनी एबे हाउ Portuguese propagated from south to north up to Gujarat and then आसीबो ईस्टर्न पार्ट को आमे देखिबा दैट इज द Madras region को आसीबो by under the leadership of whom Duplex hope this one is fine to all है ना तो मैप को भी तुम यूज करि परिबो ये फैक्चुअल पॉइंट्स मन को जमते कि प्रिंटिंग मशीन टोबैको कल्टीवेशन मेडिसिनल प्लांट्स दिस आर द फैक्चुअल डेटास आज जमते ब्लू वाटर पॉलिसी कहितली है ना तो ये तुम्हारा गोवा हे जबो तांकर कैपिटल हे जबो कोन गोवा एंड फाइनली द विड्रॉल फ्रॉम केबे 62 ना कॉजेस ऑफ डिक्लाइन एबे हम डिक्लाइन देखिबा टिके पोर्तुगीज माने कोन हैला व्हाई दे डिक्लाइन इन इंडिया अच्छा एक मिनट रुको अच्छा हां ठीक अछि पोर्तुगीज कहीं के डिक्लाइन कला में देखिबा है ना कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज ना पोर्तुगीज रो डिक्लाइन मेन रीजन होची ब्रिटिश ध्यान से मन रखबो मु एठी ताकू कनेक्ट करूनी काने ब्रिटिश आसिला परे कनेक्ट करी बोली एठी मु तमर कनेक्टिव वार को देनी कनेक्टिव वार को आगु को नबा जा भी हो ना प्रथम कॉज ऑफ डिक्लाइन कोन थिला तो कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द पोर्तुगीज जेते बेले भी कॉज ऑफ डिक्लाइन आसीबो एट एनी टाइम कोनोसी जिंसर गोटे डिक्लाइन लिखुछ ना कॉमन पॉइंट कोन लेट्स से तमे पढी न तुमको सर केमिति जानिबा के पोर्तुगीज कोन पई व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज प्रथम क्वेश्चन लेके द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये गोटे एमिति पॉइंट कॉमन पॉइंट कोनोसी भी राज्य बा कोनोसी भी पर्सन रो जदी डिक्लाइन हेची फाइनेंशियल आउ कोन हे परिबो ना एबल एडमिनिस्ट्रेटर नथिले एबल एडमिनिस्ट्रेटर नथिले आउ कोन थिला देयर वाज नो बैकिंग फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी जो हमरो जेमती लेट्स से किंग सपोर्ट करिवो लेट्स से क्वीन ब्रिटिश रो जो कंपनी थिले तांको क्वीन सपोर्ट कले बट आंकर सेमती सपोर्ट एते नथिला लाइक व्हाट आई मीन पूरा होली नेशनलाइज नथिला इट वाज लाइक ए आई वुड से व्हाट प्राइवेट कंपनी है ना तेणु करी यांको पाखरे फंड रो कमी थिला देन फोर्थ कोठी ना कोठी माने टेक्नोलॉजी रे पछरे रहि गेले एंड पर्टिकुलर आई वुड से नेवी तो नेवी रे माने पछरे रहले आज कंपेयर टू ब्रिटिश देन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देन कोन कले माने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रे मुंडो खेले जेमती देखो फॉर एग्जांपल बीजापुर रो जो रूलर थिले सुल्तान को सहित माने कन्फ्रंटेशन कले गुजरात रो देखला में सेठी भी कन्फ्रंटेशन कले एंड हियर यू कैन सी द that is the Gujarat रे में देखिबा का से कन्फ्रंटेशन कले was the ruler that time it was एक मिनट पड़ गेला गुजरात रो रूलर शाह शमशाह थिले है ना बहादुर शाह सम थिले बुझ बटले तो तांको से ये कोन कले कन्फ्रंटेशन कले तो धीरे धीरे दैट मींस आई वुड से ये जो कन्फ्रंटेशन पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन यस बहादुर शाह yes here is the बहादुर शाह तो ये जेतरो कन्फ्रंटेशन करूचो दैट मींस तमे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रे इंटरफेयर करूचो सो दैट एबे हम जो डोमेस्टिक रूलर अछि दे वुड नॉट प्रिफर यू तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रे एंट्री मारिया नथिला तांकू नेवी को स्ट्रांग करिया थिला प्राइवेट कंपनी को नेशनलाइज करिकी गवर्नमेंट रो बैकिंग दरकार थिला जेमति लेट्स से राउरकेला स्टील प्लांट when as the government is having backing of that steel plant the मतलब आमे कहबा तारो डाउनफॉल चांसेस बहुत कम तेणु करके ये थिला तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थिला एबल एडमिनिस्ट्रेटर अभाव थिला प्राइवेट कंपनी थिला नेवी एते स्ट्रांग नथिला मतलब थिला बट आज कंपेयर टू ब्रिटिश नथिला डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रे इंटरफेयर मारले एंड कोन देखिबा कि जो कन्वर्जन कले ना स्टार्ट कले that Christianity को प्रमोशन कले that also hurt the sentiments of Indian as well the native people को हट करिवो तो these were the some basic हम कहबा causes देखिबा
नहीं परिवनी तो एमती कॉमन पॉइंट तापरे किसी पढ़िया पड़ोनी बुक पढ़ी ही बुक रे जहाँ अच्छी से ही लिखो किसी दरकार नहीं टिके गेस कले हो तो लेट्स से फर्स्ट वन द गवर्नर्स दैट सक्सीडेड आल्बेक्यू देख वेर वीक जो तुमको गोटे पॉइंट कही कि दे वर नॉट एबल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब आफ्टर आम देखा आल्बेक्यू द very few people those who came those who are actually able to handle the administration and to propagate the or to manage the British Empire in India. So this would be the first ହେଇଗଲା and the last strong ruler was Duplex जदि आम देखा Duplex अच्छा आउ गोटे पॉइंट भी मुझे आड कर पारि पर्सनल इंटरेस्ट ये गोटे कॉमन पॉइंट पर्सनल इंटरेस्ट ना पर्सनल इंटरेस्ट लाइक दैट Duplex भाविला कि आई विल मैनेज एवरीथिंग सी निजर गोटे पॉलिसी तैयारी कले कि एक्सपांड करबा हाउ टू एक्सपांड द टेरिटोरीज इन इंडिया तो Duplex कथा हमें आगु को जीवा Portuguese were intolerant and fanatical in terms of the religious matter. भाव देखो, you have to be a tolerant people. ध्यान से मन को as long as you are not a tolerant तमें संभाली परिवो नहीं. तेणु कर ये जेहेतु Christianity को promotion करूँଥିଲେ they were मतलब देखो conversion करे अपने लोगों को force करते obviously native people they will get annoyed of that. They can't tolerate that one. ये भी गोटे problem देखा गला. The Portuguese administration was more interested in making the that is what fortune for themselves not for the native people ये भी गोटे problem हम देखा बोला inhuman and cruelties of the lawlessness हमें ये भी देखा जाइथिला तो कोटी ना कोटी गवर्नेंस रे भी problem थिला apart from the financial personal issues company रो जहाँ जा कहली governance problem भी थिला Portuguese and Spanish had left English and Dutch far behind during the 15th century and the first half of the 16th century but latter half of the 16th century आमे dominate करियो कि English and Holland बामे Dutch latter French आसीबो तो जा भी हो धीरे 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 कोन हला पोर्तुगीज माने को सक्सीड करियो लागिबे कि आउ कंपनी माने यूरोपियन माने आसीबे जेमति आसीबो स्पेनिश आसीबो डच आसीबे देन विल हैव इंग्लिश रू भी आसीबो धीरे धीरे पीपल फ्रॉम द अराउंड द कॉर्नर दे विल कम ओके तो ये हमको सब देखा जीवो all growing commercial and naval powers है ना west and that is the fierce struggle हमको देखा जीवो against the Spanish Portugal monopoly of the world trade हमको देखा जीवो तो धीरे 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 ट्रेड रे कोन हिजो मोनोपोली एस्टैब्लिश हिजो हम ट्रेड रे कोन आसीजो मोनोपोली के मोनोपोली करो एंती पोर्तुगीज धीरे धीरे हमके बा ट्रेड टा शिफ्ट हिजो जो प्रथम जोटा पोर्तुगीज दोज हु स्टार्टेड Portuguese माने कोन कले started the trade but gradually that trade power will be shifted to the other powers जेमति कि इंग्लिश आसिकले नाउ हॉलैंड बा हम के डच आसी जीवो पोर्तुगीज मतलब फ्रेंच आसीबो तो बस ये सब हम ताको क्रोनोलॉजिकली दैट मींस हम के बा धीरे धीरे कन्फ्रंटेशन एंड conflict among the Britishers among the British companies will grow in India then आम देखो the mighty Mughal empire ताले एमाने जेतरो आस्तले India was ruled by whom? The Mughal Empire. Okay, that was the mighty Mughal Empire. हम देखिवा that time थिला. Maratha was also there. है ना? Maratha भी थिला. तो धीरे धीरे हमें देखिवा 1300 टू जदि तमे देखिबो after the fall of 1700 केते 7 रे 1707 रे कार डेथ हबो औरंगजेब रे डेथ हैला परे जदि हमें देखिबा कोठी ना कोठी मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक हे गेला है ना तापर तमरो बहादुर शाह आसीबो जहांगीर शाह आसीबो फारूक शेर आसीबो है ना देन मोहम्मद शाह रंगीला आसीबो ये सब जो सक्सेसिव रूलर्स थे ना दे वर समहाउ वीक हमें जदि जेतरा में मुगल रो डाउनफॉल हमें पढ़िबा तो सेतरा मु तुमको कहबी मुगल रो डाउनफॉल टिके भी कहि देबी तो औरंगजेब परे जदि हमें देखिबा दोस रूलर हु केम टू बी दे वर वेरी वीक रूलर बट औरंगजेब पूर्वरु जदि हमें देखिबा लेट इट बैक फॉर हुमायूं है ना ये सब जो माने थे दे वर द स्ट्रांग रूलर तेणु हुमायूं के टाइम रे जदि हमें देखिबा किंबा अकबर टाइम रे तो दैट टाइम्स दे वर नेवर डेयर टू अटैक द हार्टलैंड ऑफ इंडिया खाली बस ट्रेड कंपनी अनुसार रहुतला है ना तो लोकल पावर जदि हम कहबा मुगल पावर सहित भी ना तांकर कोन हबो मुगल पावर सहित कोन हबो कन्फ्रंटेशन हबो ताले मुगल सहित कोन रहबो तमरो कन्फ्रंटेशन हे जिवो सो पोर्तुगीज जदि हम देखिबा बाय द टाइम ब्राजील
नॉर्थ आम कह सेंट्रल अमेरिका को से डिस्कवर कर देथिले पोर्तुगीज आउ गोटे जदि रीजन देखिबा आमे कि व्हाई पोर्तुगल द पोर्तुगीज पावर डिक्लाइन इन इंडिया एमाने डाइवर्टेड हे गेले जेंति ब्राजील को ध्यान देले लैटिन अमेरिका को ध्यान देले सेंट्रल अमेरिका को ध्यान देले बाकी एरिया दुनिया रो बाकी जो एरिया अछि तांको ध्यान देले इंडिया को खाली ध्यान देले नहीं ये भी गोटे प्रॉब्लम थला दे वर नॉट मतलब ओनली इन द विद द माइंडसेट आई विल से टू कैप्चर द इंडिया एंड ट्रेड विथ इंडिया सो दे वर हैविंग आल्सो other parts other territory around the world से माने तांको से तो भी कनेक्ट रहउतले और इक्वली इवन आई वुड से डिस्ट्रीब्यूट करके रखुतले देन आम देखिबा व्हेन पोर्तुगल केम अंडर द स्पेन है ना द स्पेनिश इंटरेस्ट डोमिनेटेड ओवर द पोर्तुगल इंटरेस्ट तापर धीरे धीरे पोर्तुगल को कैप्चर करबो स्पेन तो तांको भीतर जदि आम देखिबा द स्पेन एबे जहा चाहिबो सेटा पोर्तुगल रो ट्रेडिंग कंपनीज करिवे देन आम देखिबा पोर्तुगीज एथि पई तमरो डिक्लाइन हे जो तल डिक्लाइन रो कॉजेस कोन से मानकर स्पेनिश माने धीरे धीरे डोमिनेट करले पोर्तुगल को देन बाकी एरिया से माने डिस्कवर करले लाइक आई वुड से द लैटिन अमेरिका Central America, other parts of the world, that means their interest diverted. They were not solely dependent on India. That was one of the reason. Then other reason, the competition from the other companies, trading companies, that is from the French, from the Dutch, from the English, from the Holland. ये बड़ी गला, confrontation बड़ी गला. Then corruption भी देखा जो personal interest, regional ruler से तो confrontation कले, and लोगों को प्रति ध्यान देले नहीं केमती beneficially activities करीबा. नेवी को एते स्ट्रांग कले नहीं तो दीज वर द आमी कहबा प्रॉब्लम दैट अल्टीमेटली लेड टू द एंड फाइनली इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश जदि आमी देखिबा तमे जानिचो दैट इज द रॉबर्ट क्लाइव इज द मैन हु इज द आर्किटेक्चर टू एंड द पोर्तुगीज रियल पावर इन इंडिया इन द थर्ड कर्नाटिक वार ये तो समझते जानिचो डच पोर्तुगीज पर कि आसीबो डच ओके पोर्तुगीज पर कि आसीबो डच तो अच्छा 1 मिनिट एठी टिके मु कर्नाटिक वार को पढ़ाऊँ जस्ट है ना अच्छा मु सॉरी ये तो फ्रेंच रहबो ना सॉरी मु गलत कनेक्ट कर देछि सॉरी तापर आसबो तमरा डच देन डच आसी पहुंचो दे वर फॉलोड बाय हुम डच आसी पहुंचले देखो 1602 रे द नेम वाज दैट इज विरिनिक्ट वुड्स इन दिस कैंपेनिंग VOC, the name founder जे कहते Dutch set up their first factory Masulipatam, Andhra Pradesh. एटा टिके मन रखिबो देन तापरे सूरत देन ब्रोच कैम्बे ये सब अहमदाबाद गुजरात ये सब रीजन रे से माने तांकर फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कले इन द मिड ऑफ 17th century में देखिबा पोर्तुगीज एंड व्हाट हम देखिबा they own over the Portuguese ऊपर माने धीरे धीरे they started the control over the Portuguese and emerged to be the most dominant power in European trade in the east हम जे देखिबा धीरे धीरे पोर्तुगीज रो पावर कमी गेला डच रो पावर इंक्रीज हे गेला they started to capture the important choke point जेमति कि तमरो मालाया स्ट्रेट वगैरह जहा को हमें मालाका स्ट्रेट वगैरह कहूचे इंडोनेशिया को कैप्चर करिवे ना दे डिफीटेड द इंग्लिश दे आल्सो तले हम देखिबा देन दे डिस्कवर्ड करथला बहुत सारा एरिया डिस्कवर्ड करबो जो हमर पूरा मलेशिया पेनिनसुला को कैप्चर कर देबो इन 1623 डिफीटेड द इंग्लिश अटेम्प्टेड टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ देयर इंग्लिश मध्य कोन करथले ना जेते बोले हम कहबा जो डच आसिला ना डच एक्चुअली इंडिया को बेसी ध्यान दो नथला से इंडोनेशिया को बेसी ध्यान दोथला इंडोनेशिया मलेशिया से एरिया तांकर फोकस थिला इंडिया बास खाली गोटे स्टॉप थिला स्टेशन थिला तांको पई इंडिया रे तांकर बेसी किछि इंटरेस्ट नथिला तेणुक ये मैंने इंडोनेशिया को कैप्चर करके रखी बट इंग्लिश इंडिया को जो आसला 1600 तुम जान 1600 मसीह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश होता बाय द किंग दैट इज सॉरी एलिजाबेथन वन सॉरी क्वीन एलिजाबेथन वन तो इंग्लिश इंडिया को आसला पर से माने दे आल्सो स्टार्टेड टू गिव देयर अटेंशन टुवर्ड्स द इंडोनेशिया एज वेल एंड दैट लेड टू द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द इंग्लिश एंड डच इन इंडोनेशिया तेणुक से बैटल रे कोन हेतबो ना डच विल ओन द बैटल एंड दैट इज द ब्रिटिश had to face the defeat in the hand of Dutch. तो ये भी गोटे rivalry तांकर थिला. That means हमें को rivalry start हितला. तो Anglo Dutch rivalry जो थे हमें British and इतर देखा जो continue about the 7 years during the Dutch lost their settlement to the British one by one and finally Dutch were defeated by the British in the battle of but that is Bedara है ना 1759 तापर इंग्लिश इंडिया रे कोन करबो कैप्चर करबो धीरे धीरे इंग्लिश आसीबो केबे ना 1600 रे
ठीक तुम 1600 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश हम इंडिया को आसो धीरे धीरे बाय द मिड ऑफ हम कह 17th सेंचुरी दैट मीन्स मिड ऑफ 17th सेंचुरी कहले कौन 1750 सॉरी एटा 18th सेंचुरी सॉरी 1760 जदि देखबा 1759 कहले 18th सेंचुरी है ना 18th सेंचुरी बेलको माने स्ट्रांग हे गेले ऑलमोस्ट दे हैव स्पेंट 150 इयर्स जदि हम देखबा से भितर हमने स्ट्रांग हे गेले एंड 18th सेंचुरी को धीरे धीरे ये इमर्ज कले तो यहाँ एक्चुअली 1759 बेलू बहुत ही स्ट्रांग है जो ब्रिटिश कारण बिकॉज ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव बिकॉज ऑफ दैट पर्सन रॉबर्ट क्लाइव ये रॉबर्ट क्लाइव जो स्ट्रांग है जो कंपनी तो डच रो एंड हमको देखा मिलो ना ब्रिटिश आसिक पहुँचो केवे जोटा हम देखो 1600 तुमको कही कि 1600 डिसेम्बर तुम देखो क्वीन एलिजाबेथ वन तो केवे ना 31st डिसेम्बर 1600 वाज द पॉपुलरली नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एटा गोटे कंपनी ध्यान से मन कह एटा कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट नुह कहले ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन फाउंडेड ए कंपनी ना होची ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपनी ट्रेड करिवो इंडिया सहित ब्रिटिश नुह अगेन आई रिपीट कारण तुम पीट्स इंडिया एक्ट कौन हो ब्रिटिश टेरिटोरी बोली कौन करेंगे फाइनली दे विल डिक्लेयर कि दिस इज द ब्रिटिश टेरिटोरी ऑफ इंडिया बट बिफोर दैट इट वाज द कंपनी हु वाज कंट्रोलिंग द एवरीथिंग होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल है ना तो आम कहबा ईस्ट इंडिया कंपनी दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे ट्रेडिंग कंपनी थिला ये कौन थिला इट वाज ए ट्रेडिंग कंपनी है ना फाउंडेड बाय हुम क्वीन एलिजाबेथ वन ताले ये इनिशियली कौन थिला गोटे प्राइवेट कंपनी थिला ध्यान से मन को इनिशियली इट वाज ए प्राइवेट कंपनी तो ये कौन थिला गोटे प्राइवेट कंपनी थिला ठीक अछि तो प्राइवेट कंपनी ट्रेड करियो कहा सहित इंडिया सहित ट्रेड करियो टू हुम दे डिफीटेड द डच है ना दे डिफीटेड द डच तो एथरे देखि दियो नाउ इंपोर्टेंट आम कहबा तांकर जो ट्रेडर की इंपोर्टेंट ट्रेडर ना जेते बेले 1600 मसिया रे हम देखबा 1600 एडी रे ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड दे हैड टारगेट टू ट्रेड विथ इंडिया से ट्रेड करिवो एंड इंडिया वाज रूल्ड बाय हु मुगल दैट इज द एम्परर के देखो जहांगीर थिले दैट टाइम जहांगीर थिले तो आसिक फास्ट कैप्टन हॉकिंस आसिक पहुंचले इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर कि सर आई नीड द परमिशन टू ट्रेड विथ इंडिया तो जहांगीर एत इंप्रेस हेले नहीं तांको ये रे तो बस सूरत रे चाहूले कंपनी करिया पई आउ इंडिया सहित ट्रेड करिया पई बट जहांगीर वाज नॉट इंप्रेस्ड तेणु तांको परमिशन मिलिबो नाही सो ही वाज रिफ्यूज्ड कोन पई ना सेते बेले पोर्तुगीज माने स्ट्रांग पावर थिले ध्यान से मन को पोर्तुगीज माने कि 1750 बेल को पोर्तुगीज 1700 आम कह 18th सेंचुरी पोर्तुगीज रो पावर कमिबो ना पोर्तुगीज तो जस्ट आसिले 1400 आसिले तो आम कह 1650 पर ध्यान से मन को 1650 पर पोर्तुगीज रो पावर कमिबो इन इंडिया तो बाय दैट टाइम गुजरात कोस्ट को किए कैप्चर करके रखी पोर्तुगीज आम पढ़ते दैट इज द व्हाट नीनो कुन्हा जे कैप्चर करके रखी बहादुर शाह को डिफीट कला परे गुजरात रे तेणु पोर्तुगीज को जदि आम देखा एबे तुम किसी भी जिनस करूच ना कोस्टल रीजन रे यू हैव टू गेट द परमिशन और यू हैव टू बी कॉर्डियल विथ द पोर्तुगीज तेणु करके जेते बेले आसिला कैप्टन हॉकिंस टू गेट द परमिशन ऑफ द ट्रेड फ्रॉम द जहांगीर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर एथि मना कले कारण पोर्तुगीज माने चाहू नथिले ब्रिटिश मानको परमिशन मिलू तेणु से माने प्रेशर पकाउथले तले नाइ हे परिबो नै सो प्रेशर फ्रॉम पोर्तुगीज एंड जहांगीर डिड नॉट अलाउ फॉर द ट्रेड टू द आम कहबा कैप्टन हॉकिंस तो कैप्टन हॉकिंस दुखी है कि फेरी जो तापर आउ जने लोक आसबो कैप्टन मिडलटन कैप्टन कोन आसबो मिडलटन ये पर्सन आसबो 1609 रे इट वाज 1609 कैप्टन मिडलटन जे तुम स्पेक्ट्रम बुक्स पढिबो देखो से लिखा थिबो हु केम टू इंडिया अगेन ही विल फेल्ड आल्सो से भी फेल्ड हे जो तांको भी परमिशन मिलेबो नाही टू ट्रेड विथ इंडिया ही विल आल्सो फेल तापर आसबो जने पर्सन अगेन 1611 को जने आसबो कैप्टन बेस्ट के आसबो कैप्टन बेस्ट तो लैटर 1611-12 जने पर्सन आसबो द नेम इज कैप्टन बेस्ट ना द कैप्टन बेस्ट कहले जानि परथो है ना तो बेस्ट नारु जानि परछो दैट पर्सन ही कन्फ्रंटेड एंड डिफीटेड द पोर्तुगीज आर्मी द नेवल फोर्स इन द कोस्ट ऑफ सूरत तो सूरत कोस्ट रे कोन हैला ना ये जो कैप्टन बेस्ट थिले ना पोर्तुगीज रो नेवी को पोर्तुगीज रो रूलर को डिफीट करिवो जो थरे कि जहांगीर इंप्रेस हो जाइथिले जहांगीर कहले एटा तो चाहूथिली मु समवन कम्स एंड डिफीटेड द पोर्तुगीज सो दैट आई वुड नॉट बी इन प्रेशर
एथरे से इम्प्रेस है कि कोन कले कले ठीक अछि आई एम नाउ अलाउइंग यू टू सेट अप द कंपनी दैट इज व्हाई दे सेट अप द कंपनी इन सूरत डन एवरीवन हे परिबो so this person Jahangir allowed the Surat re jodi am dekhiba settlement allow kare because of the captain based who defeated the what kaku that is the Portuguese in the battle of kono battle of kono hitala anyone को battle hitala anyone अरे तमरो जो कोन द फेमस मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन कोन गोटे नथला कोन सेही मूवी नाम सरे बुझ पड़तो नहीं मतलब नाटा सही बोले कौन से जो फेमस गुड मूवी नहीं अमिताभ बच्चन रो पुराना मूवी जब भी हो नाटा मन पड़ोनी यार से देखी दो मतलब नॉट रिकॉलिंग दैट नेम राइट नाउ सो कैप्टन बेस्ट आसी पहुंचो जोटा कि कहली 11 रे 1611 रे कैप्टन बेस्ट आसी पहुंचो तले फास्ट केस ले कैप्टन हॉकिंग्स देन कैप्टन मिडलटन देन आसबे तोर कैप्टन बेस्ट जे कि डिफीट करिवो एंड गेट द परमिशन तेनु करकी 1612 नो इट वाज 1613 देन समन को 1613 रे जहांगीर परमिशन देला टू सेट अ फैक्ट्री इन सूरत केबे 1713 1712 नो 1713 रे देले कोन परमिशन जहांगीर कंपनी करिया पे कोठी सूरत रे काहे की कारण एबे पोर्तुगीज को डिफीट करिछबा कैप्टन बेस्ट तेणु करिकी कैप्टन हॉकिंग अगेन ही विल कम टू इंडिया ध्यान से मन करबो कैप्टन बेस्ट जेतरो हरैबो पोर्तुगीज को हॉकिंग अगेन केम टू इंडिया टू डू द सेटलमेंट करिकी कोन करबे एबे तांको परमिशन मिल गेला सूरत रे कंपनी के लिए बट इन बिटवीन कैप्टन बेस्ट जेबे आसले के कैप्टन बेस्ट 1611 ना 1611 रे कैप्टन बेस्ट आउ गोटे काम करथिले बेस्ट काम करथिले कोन जो कल ठीक अछि वेस्टर्न इंडिया रे पोर्तुगीज कमांड करके रखी तो ईस्टर्न साइड रे आंध्र प्रदेश को पड़ेबा मासुलीपट्टनम जो मासुलीपट्टनम रे फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश हेतला अगेन आई रिपीट द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश इन 1611 in Masulipattnam. Later on, the first permanent jodi ame कहबा that is the Surat. Once again I repeat, 1613 the first permanent factory with the approval of the I would say Jahangir of the Mughal Empire. But 1611 रे ame देखबा temporary factory Masulipattnam रे हितला. So that is the all about the ame कहबा कि how they started, how they began their journey in India. By 1619, English established their fort in Agra. Agra रे कहीं कहले कारण now they are getting the faithfulness of Jahangir or the Mughal ruler, because Mughal ruler को लगेला कि now they can also safeguard us. ये माने ये हमारा काम का है क्या पोर्तुगीज को हरई ना तांको कथा सुनुची तांको सपोर्ट करूची कि हमारा काम का है. दैट इज व्हाई अहमदाबाद बड़ोदरा देन भारूच वगैरह ई सब गुजरात कोस्टल फैक्ट्री एंड हम कहबा फोर्ट्स वे एस्टैब्लिश करे को लागले. दे ओपन देयर एटा मु तुमको देखो जोटा मासुलीपट्टनम कहतली दे ओपन देयर फैक्ट्री फर्स्ट फैक्ट्री लिखा है देखो फर्स्ट फैक्ट्री एंड दिस इज द टेम्पोररी दिस वन वाज टेम्पोररी फर्स्ट परमानेंट होची सूरत केबे 1613 है ना ये रहबो तुम्हारा 1611 डन एवरीवन. 1639 रे में देखिबा that is Francis Day obtained the site of Madras को आसी पहुंचले and he established the कोन नाम ऑफ सेंट जॉर्ज फोर्ट एटा गोटे फोर्ट ता प्रथम थर पई ईस्टर्न कोस्ट को आसीले सबने एंड सेंट जॉर्ज फोर्ट कले मद्रास रे. दिस इज द हिस्टोरिकल डे आमे देखिबा कारण ये फोर्ट मद्रास रे बे सूरत आसीले मासुलीपट्टनम तो हम ऑलरेडी देखितले and now they are come to the Madras and Madras become the what soon Madras become the headquarter कोठी हम देखे करमंडल कोस्ट रे बा ईस्टर्न साइड रे हमें हे गेला Madras headquarter सूरत रहला वेस्टर्न साइड रे. धीरे धीरे एमाने भी एरिया स्प्रेड करबे लाइक पोर्तुगीज started from the Kerala ended up in Surat or in the Gujarat coast. Then now they are starting from the Madras and they would be ended up in Bengal as well. Hope you are getting me. So everyone they will try to dominate the coastal region because of the trade, because you need to pass your trade through the coastal region and no way from the hinterland of the India. So that means okay, that is why they started their what I would say the business from the Coromandel coast and they will subsequently move towards the Bengal रे जाइकी पहुंचबे आ बेंगल को एक्वायर करिवे. बेंगल देखि ध्यान से सुनो अगेन आई रिपीट ब्रिटिश माने कोस्टल एरिया को प्रथमे कैप्चर कले
कोस्टल एरिया को कैप्चर करके देन बेंगल को कैप्चर कला पर एंट्री मारिले थ्रू द अवध इनटू द हार्ट ऑफ इंडिया और इनटू द हार्ट ऑफ मुगल and dismiss the Mughal and become the successive ruler of India and rule for the 200 years. That means तो गोटे theory अछि geography रे भी गोटे theory अछि heartland and dreamland theory. If you control the coastal area, you will control the heartland. ध्यान से सुनिबो ये गोटे होछि आको कहवा जे कोन रीमलैंड थ्योरी आको कोन कहवा जे रीमलैंड थ्योरी ज्योग्राफी ऑप्शनल रे गोटे अछि है ना तो मतलब मु कहनी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल मु एठी पढुछि बट आई कैन कनेक्ट दोस पॉइंट ओके सो दे स्टार्टेड देयर सूरत देन बॉम्बे दे स्टार्टेड टू कैप्चर बॉम्बे एंड दैट वाज डाउरी रे देई दो पोर्तुगीज माने जानछे तमे कैथरीन 2 जेतरे मैरिज कर जो कैथरीन जेतरे मैरिज करो के चार्ल्स 2 को तो से कौन हो डाउरी रे बॉम्बे को देदो से सब पार्ट में देखा देन मद्रास को आसिले धीरे 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 कोस्टल एरिया को कैप्चर करते ब्रिटिश तापर बॉम्बे देकी तम सॉरी बेंगल देकी तुम जानते बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सार ये सब देकी एंट्री मारिले कोठी ब्रिटिश आसिले दिल्ली को एंड दे स्टार्टेड द रूल टू द होल इंडिया तो गेटवे थिला कोन ना बेंगल बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सार ना बुझा पड़िबनी ये है ना सो दैट मीन्स धीरे धीरे आसिले एबे जेतेबेले तुम कोस्टल रीजन को कैप्चर करूच दैट मीन्स आगे कोस्टल को कैप्चर कला पर इंटीरियर को जीवो के ब्रिटिश बट कोस्टल रे आज ऑफ ना फ्रेंच अछि तुमको ताकू खत्म करे पर डैनिश को खत्म करे पर इसो खत्म कला पर से आगो को जीवो तण करके हम देखा ता पूर्वरु देन हम देखा तो ब्रिटिश सेटलमेंट्स मद्रास बॉम्बे कलकत्ता become the what nuclei of the flourishing cities धीरे धीरे ये सब सिटीज आसेला एंड ब्रिटिश ध्यान से देखिए एठी 1690 रे कोन कला कलकत्ता जो आमर देखा जॉब चार्नक ही वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता सिटी ध्यान से मन के जॉब चार्नक द ब्रिटिश इंग्लिश मैन और आई वुड से द जे की तमरो फोर्ट विलियम भी बिल्ड करथिले फोर्ट विलियम कोठी कलकत्ता रे देन सेंट जॉर्ज कोठी दैट इज द in your Madras. These two important fort you have to remember. Okay. तो मछलीपट्टनम जोटा थिला मछलीपट्टनम रु धीरे धीरे ब्रिटिश को उठ के सला मद्रास को एंड कलकत्ता को आसी जब तुम कलकत्ता कोन जॉब चर्नक धीरे 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 ईस्टर्न कोस्ट कैन अबे वेस्टर्न कोस्ट बॉम्बे सूरत ऑलरेडी दे हैव कैप्चर्ड इट ना बुझा पड़िबनी एनी एवरीवन रे बुझा पड़ुची समस्त को है ना कोन कहू को ना फास्ट हे जाउची काकू लागुची बहुत फास्ट हे जाउची एनीवन डू फील सो No, sir. फाइन ना बाकी समझते feels good or तमु लागुची कि स्पीड हे जाउची बहुत देन आसो तमरो फ्रेंच आसिकी पहुंचबे इंडिया रे है ना तापर हम कनेक्ट करबा तो फ्रेंच इंडिया रे आसी पहुंचला दैट इज द लुई 14 है ना तो फ्रेंच भी चाहिला कि यार ब्रिटिश इफ ब्रिटिश इज डूइंग ट्रेड पोर्तुगीज इज डूइंग ट्रेड देन डच आल्सो डूइंग ट्रेड with India then why not France they should also come forward and they should also do the trade with India as well then कोरी फ्रेंच कंपनी मध्ये कोन कले they also established the trading company semane मध्ये trading company करके बसे को लागले and they also targeted the Masulipatanam now why they targeted the Masulipatanam because यदि हमें देखबा the French first targeted the eastern side because western side was a stronghold of the ब्रिटिश मानकर पूरा जो बॉम्बे ठु नै कि सूरत ए सब रीजन बहुत स्ट्रांग होल्ड थिला तनको जेतले फ्रेंच आसुची आ जदी से माने कोन करिवो वेस्टर्न कोस्ट को टारगेट करचंती दैट वुड बी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विथ द ब्रिटिश so they thought it would be better to choose the eastern part of the coast okay तनको से माने ईस्टर्न कोस्ट को आसीबो फ्रांसिस्को मार्टिन वाज द फाउंडर पुडुचेरी हां ना फोर्ट लुइस तमरो पुडुचेरी को कैप्चर करिकी they targeted the eastern coast को कहले इथि पई then धीरे धीरे they will now move towards the I would say the मद्रास ए पूरा रीजन को जेमति तमे देखियो बालेश्वर को आसेला माहे कराईकाल कासिम बाजार फ्रेंच एस्टैब्लिश दैट मींस बंगाल को आसेला कासिम बाजार ओडिसा रे बालेश्वर माहे को कैप्चर करला कराईकाल को कैप्चर करला है ना ये सब कैप्चर करला तो दैट मीन्स आम देखा जो अच्छा माहे कराईकाल कोठी अछि एनीवन माहे कोठी अछि केरला कोठी अछि केरला कराईकाल कोठी तमिलनाडु यानम कोठी आंध्र प्रदेश
सो दिस वर द रीजन आपको सब कैप्चर कले धीरे धीरे देन आसो तांकर स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंच रूलर होची डुप्लेक्स है ना मतलब मोटे गलती रे कहि देथिले बोधे तो स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंच रूलर होची पोर्तुगीज कहि देथिले ना आपण मु डुप्लेक्स को एटी के मते करेक्ट कर दबो डुप्लेक्स होची फ्रेंच गवर्नर मु जदी भूल रे कहि देथि है ना तो ताको करेक्ट कर दबो एंड कानाटिक वार हबो आ कोन ना फ्रेंच इमर्ज धीरे धीरे बाकी समस्त खत्म हो जो ना रहिबो किए ब्रिटिश एंड फ्रेंच एंड कौन रहिबो फ्रेंच